This is Paritosh Vyas welcoming you from the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics in Faridabad. Let me share some very disturbing facts with you at the very outset. 300 million people, which is roughly 30 crore people, are annually affected by depression across the world. And this number grows by an annual rate of 18%. 7% of India's population suffers from depression. This becomes a very big problem for us. And India has been declared the depression capital of the world. 80% of those people who suffer from depression in India do not seek medical or professional help. The result, many of them are driven to the extreme step of committing suicide. India is also called the suicide capital of the world because our suicide rates are among the highest in the world. Since we are today in a very critical time and news are pouring in from across different parts of the country of people being driven to take the ultimate step, we decided to do this special segment of the speaking order on mental health. Coincidentally, we also received a lot of requests on our social media platforms to do such an episode. So I have 4 very special guests with me today. All 4 are my very good batchmates, very good friends. At the same time, they are officer trainees of the Indian Revenue Service. 2 of them are doctors, and one of them also has a very special story to share with us as far as her experiences with depression in her family are concerned. So let me welcome them to this episode. I'll start by welcoming Dr. Nitin Kumar. Nitin, welcome to the episode. Thank you, Paritosh. I'm very delighted to be here and to talk about a very sensitive issue of mental health, which is quite important for all of us. And considering how neglected we see mental health in our daily lives, it becomes very important to talk about it. So we can start by, if we talk about the definition of health, most of the people, they consider it to be a physical aspect only. But if we go by the definition of WHO, it states that the health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not just an absence of infirmity or disease. So emphasis here should be on the mental aspect because it's the most neglected of all these 3, that is the physical, mental, and social. So it becomes very important that we talk about it. And also recently we have seen that when the United Nations, when they spelled out the Sustainable Development Goals, they included mental health and laid great emphasis on it, that all people across the world, they should have access to mental health and live a healthy life mentally. So one of the most popular or well-known mental illnesses is depression. And I have seen people casually drop the word depression. So what is depression? What are the other mental illnesses that people might be facing? So could you just talk us through that? You see that people normally consider depression, anxiety, and stress, and they use them interchangeably. बट इनका डिफरेंस ये है कि जैसे स्ट्रेस को हम समझते हैं आसान भाषा में तनाव, वो सभी की जिंदगी में होता है और ये हमारा डेली लाइफ का पार्ट है. और कई बार ये होता है कि बिना स्ट्रेस के हम अपनी लाइफ को जी भी नहीं पाते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट का, अगर उसे थोड़ी बहुत स्ट्रेस अगर अपने एग्जाम्स की नहीं होगी तो वो नहीं पढ़ेगा. तो इस तरह से स्ट्रेस कई बार लाइफ में जरूरी भी होती है. पर अगर हम स्ट्रेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं तो वो आगे जाके रूप ले लेता है डिप्रेशन का. और डिप्रेशन को क्लिनिकली अगर डायग्नोज करना होता है तो उसके कई सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप, और किसी काम में जिसमें हमारी पहले रुचि होती थी वो काम ना कर पाना, शरीर में एनर्जी की कमी लगना. अगर ये सब सिम्टम 2 हफ्ते से ज्यादा अगर किसी की लाइफ में है तो उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है. और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सिवियरिटी,
we can grade them into mild, moderates and severe type of depressions. और accordingly उसका treatment करते हैं फिर. So I'll come back to you, Nitin, but I would like to go to Anukriti. Anukriti, first of all, thank you for giving us the idea to do this special episode on mental health. You're welcome. You have had a very intimate experience in dealing with somebody who had suffered from depression. So what were the symptoms or what were the signs that you observed in your relatives which led to you deciding that the person was suffering from depression, and how did you go about in treating them or helping them come out of it? Okay, Paritosh. So actually depression, since I've seen this in a very close member of my family, this issue is really close to my heart. And I can vouch for it that जिस family ने इसको देखा नहीं होता है, उनके लिए it's very difficult to understand what this issue is. It's not very easy for everyone to comprehend what depression is. So जो हम लोग के family member थी, she's normally a very social person. काफी हम लोगों से बात करना, social activities में participate करना, hygiene के मामले में भी बहुत careful. तो और cooking वगैरह सब कुछ very disciplined person normally. But कुछ ऐसा होने लगा कि when she used to return from a job, she used to sit in front of the television और 4-5 घंटे जो है लेट के she used to watch TV. So we thought कि ठीक है, इनको interesting लग रहा है थोड़ा, and she won't get up, she won't change her dress, she'll lay down, she'll watch TV, she'll sleep. फिर उनसे कुछ कहो कि शाम को कहीं चलना है तो she'll straight away say no, मेरे को नहीं जाना है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ. And the intensity of it increased with time, so much so that कि अगर कुछ बहुत important social functions है, अगर family में कोई function है जहाँ उनका जाना important है, वहाँ पे भी she was not willing to go. इस तरह की चीजें होने लगी. तो उस तरह का बेटा she was sleeping. उनके केस में ऐसा था कि उनका वेट काफी बढ़ रहा था, क्योंकि वैसे वो बहुत एक्टिव थी, पर ये चीज होने की वजह से काफी होने लगा. 1 महीना 1.5 महीना ऐसे चल रहा है कि सिर्फ सो रही है, बात नहीं कर रही है. बात करो तो she used to scold us. तो रूड बहुत ज्यादा हो रही थी. One day what happened कि she, as I told you, hygiene के standards high थे. Daily she used to take bath early in the morning and बहुत साफ सफाई से रहना. She was going for work. I was bidding her goodbye, and what I noticed was that her clothes had those sweat linings, the white linings which appear after say 10 days if you haven't washed your clothes. So that raised an alarm for all of us. हमें लगा कि अब ये ज़्यादा हो रहा है. ऐसा she is not like this. 2 महीना हो गया है, कुछ कर नहीं रही है, बात नहीं करती है, चिड़ी भी बहुत ज़्यादा रहने लगती है. So then we talked to her आराम से कि I think हम सभी को लग रहा था. हमने कहा कि हमें लगता है आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए. एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज कि मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि वी ऑल शुड सी अ डॉक्टर. सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट कि शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम समथिंग व्हिच इज नॉट नोन टू ऑल ऑफ अस. और हम पढ़ रहे थे इतना ज्यादा, पर हम लोगों ने पहली बार अपने घर में देखा. नहीं, वो 2 कारण से बहुत खुशनसीब है. The first is that you could identify that she was suffering from depression, and the second thing, she was ready to accept and acknowledge that she was undergoing something of this sort. I think उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो उनके फादर थे, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहा है. तो और हम लोग क्योंकि उस समय तैयारी कर रहे थे, तो हिंदू में बहुत ज्यादा निकलता था, तो हम लोग काफी पढ़ भी रहे थे, तो उसमें ये था कि ये जेनेटिक हो सकता है. तो हमें लगा कि जब नाना जी को ऐसा है तो हो सकता है कि इनको भी हुआ हो, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल. तो फिर उसके बाद ये हम लोगों ने बात करी और उन्होंने भी कहा कि हाँ, शी एक्सेप्टेड इट कि चलना चाहिए. So this brings me to the next question. नितिन, डिप्रेशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं? जैसे एक अनुकृति ने बताया इट कुड बी जेनेटिक, तो और कौन से कॉजेस हो सकते हैं और वल्नरेबल सेक्शंस कौन है? जैसे डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है. There are certain sections which are more prone to being affected by depression. So please talk us through that. डिप्रेशन के कॉजेस जैसे अनुकृति ने बताया, एक तो जेनेटिक हो गया. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई डिप्रेस्ड रहा है
तो हो सकता है कि आपको भी आगे चल के डिप्रेशन हो लाइफ में। दूसरा, स्ट्रेस जो लाइफ में होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उसको एक्यूमुलेट होने देते हैं तो वो आगे चल के डिप्रेशन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कुछ लोगों में, जैसे हार्मोनल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के टाइम पे, या फिर टीन एज में, या फिर मीनोपॉज में, तो उनसे भी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर जैसे कोई लाइफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो, जैसे कोई आपका नियर एंड डियर किसी की डेथ हो जाती है, आपकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर आपकी खराब हैं, या फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ काम करने वाले लोग हैं, उनका काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, तो उन लोगों में डिप्रेशन काफ़ी पाया जाता है। अगर आप बात करें ग्रुप्स की जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पेशली जो कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है ये। दूसरा, जो एल्डरली जो अकेले रहते हैं घर में, जिनसे कोई बात करने के वो नहीं होता है उनके साथ। तीसरा, जो हाउसवाइफ होती हैं और जिनके जो डोमेस्टिक वायलेंस और अदर इश्यूज से भी डील करती हैं, और प्रोफेशनल्स की तो बात कर ही चुके हैं। तो ये सब ग्रुप्स हैं जो स्पेशली वल्नरेबल होते हैं डिप्रेशन के लिए। सुमन, अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। We have with us Dr. Suman Yadav. She became a mother last year. And how is Shauri doing, Suman? Thank you, Paritosh. Thank you for having me here. And Shauri is doing great. So, Suman, since Nitin was talking about the causes, one of the causes that he mentioned was postpartum depression. The depression that women face after pregnancy. So, could you tell us more about it? What are the causes and how can you prevent such bouts of depression in women? Please tell us about it. Paritosh, like we all know that postpartum depression is a type of depression that affects women after the birth of her child. So, like it is very common in females after childbirth to feel irritated, to feel sleepless. She has mood swings, and she gets angry most of the times. These things are common to most of the women, but these are commonly known as baby blues, and we should not confuse these baby blues with postpartum depression. So, like if these symptoms get aggravated, or if they don't go away after like 2-3 weeks, they persist for long, and if the person or the female, she feels that she cannot carry on her routine life, then I think it's a red flag, and we should be serious that it's postpartum depression. So commonly the symptoms that are seen in females are they're common to any kind of depression. Like we all know, restlessness is there, mood swings is there, anger is there, difficulty in sleeping, and appetite loss is there. Person is very fatigued, and all these symptoms. And sometimes he has some suicidal thoughts also. Same symptoms are seen in postpartum depression. The main part I want to emphasize upon is the prevention part. So before we talk about prevention, I think like Anukriti has also talked about it, the first step is to acknowledge that the person has a depression. That is the first thing. And इस चीज के अंदर I think जो भी patient के near ones होते हैं, they have a special responsibility, because these are the people who actually first notice these signs. So prevention ke there are certain things we can make certain change in our common lifestyle, which can I think they can go a long way in preventing depression in people. Firstly, I feel we should always keep the communication lines open. You should always share your feelings, your problems with some loved ones. Everybody knows about it. Secondly, I think we should take out time for exercise. A simple 30 minutes walk, it can do wonders. In fact, research says that exercising is as good as medication. Third, I would say that meditation, we can focus on meditation also. If you do meditation, it helps to calm your mind. It also helps you to know what you feel, what you want in life. And another factor is that you should move out in sunlight, get more of sunlight. At least 10 to 15 minutes of sunlight can actually help to elevate your mood. There's scientific evidence behind it.
And also, apart from that, you can spend time, you can take out time for yourself, take proper sleep, proper diet. All these things definitely can treat mild form of depression and can prevent people slipping into depression. And if these symptoms, like even if symptoms are very severe and after taking all these preventive measures, it is not controlled, then definitely it's a time to consult a psychiatrist. So Anupriti, let me bring in you at this point. I think there are three ways of dealing with any mental illness. The first is to undertake social steps. I mean, you talk to people, you communicate, you acknowledge your illness. The second is to make lifestyle changes. And the third is, which is the extreme, is to take help from a medical practitioner and undergo a series of medications. Mm-hmm. So how did you help your relative come out of depression? So first of all, it depends upon the stage of depression. So you take to the doctor and doctor decides कि किस level पे treatment की ज़रूरत है. जैसे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, दे कैन वैरी फ्रॉम बहुत ज्यादा सोना से बिल्कुल नींद नहीं आना. तो अगर आदमी को जैसे नींद नहीं आएगी तो वो चीज एग्रीवेट होती जाएगी ओवर द टाइम, राइट? तो उसको सुलाना बहुत जरूरी है. तो अगर उसके लिए मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे आपने कहा कि एक्सट्रीम स्टेप है मेडिकेशन लेना, तो ऐसा नहीं है. इट्स लाइक जो ह्यूमन ब्रेन है, दैट इज लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो अगर हम किसी और चीज को ठीक करने के लिए दवाई लेने में झिझकते नहीं है, तो ब्रेन के लिए भी उतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो वो एक चीज है. तो इट इज फॉर द डॉक्टर टू डिसाइड. तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर जो बताए वो आपको करना है. दूसरा जो लव एंड केयर वाली बात है, जब किसी को जैसे डिप्रेशन होता है तो दैट पर्सन फील्स वेरी गिल्टी विद इन. पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू बना रखा है कि अरे वो तो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या पागल हो गए, या दिमाग खराब हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं. तो पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता बहुत इजीली कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है. तो यू जस्ट नीड टू टेल देम कि इट्स फाइन. क्या हो गया, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है. जब किसी को कैंसर हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, जब वो हाथ में नहीं है तो इसके लिए गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो जस्ट उनको बहुत रिलैक्स करने की जरूरत है. फिर एक चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. द पर्सन गेट्स वेरी रूड, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई डू आई फील सैड ऑल द टाइम. मुझे हर चीज में नेगेटिव दिखता है. एंड पर्सन ट्राइज टू पुशेस यू अवे कि आप जाओ, मुझे बात नहीं करनी है. और पर वो अंदर से चाहता है दैट यू सिट डाउन एंड लिसन टू व्हाट, क्या बोलना है, लोगों के बारे में फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी है. तो यू जस्ट स्टे देयर एंड ट्राई टू टॉक टू देम. उनको छोड़ना नहीं है अकेले. और फिर जैसा सुमन ने बताया, फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आप जब टहलते हैं या रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ही फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में. एंड यू ऑल्सो स्टार्ट कैचिंग अप अ शेड्यूल. थोड़े आप डिसिप्लिन्ड होते हो लाइफ में. तो वंस यू ब्रेक दैट साइकिल कि आप साफ नहीं रहोगे या एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपना ध्यान नहीं दोगे, कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो करोगे, जब वो चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती है तो बहुत ही वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाती है. एंड देन एंटी डिप्रेसेंट्स और मेडिसिन तो हेल्प कर ही रही हैं. तो आई थिंक ये बहुत एक होलसम अप्रोच होती है. और एक और चीज होती है, इट्स नॉट कि जैसे एक बार डिप्रेशन किसी का सही हो गया तो फिर वो सही रहता है. इन मेनी केसेस, जैसा कि हमारे केस में है, इट्स अ रिकरेंट थिंग. साल में एक बार या 2 साल में एक बार हो जाता है. बट नाउ द पर्सन इज मोर मेंटली प्रिपेयर्ड. जस्ट I think Nitin will join us now. So the person is more mentally prepared in that case. उसे पता है कि यार अब हो सकता है इस साल मेरे को फिर से हो जाए या फिर अगले साल हो जाए, तो ठीक है, it will pass on. थोड़ी दवाइयाँ लेंगे, ठीक हो जाएगा. तो बस यही है, just be mentally prepared कि हो गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. So Nitin, welcome back. So while I was listening to you, मुझे 2 विचार आए. पहला कि why is mental illness a taboo? Why don't we talk about it? Why don't we discuss it? जैसे तुमने कहा कि अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई मेंटल इलनेस है तो उसको लोग पागल लेबल कर देते हैं. इनफैक्ट साइकियाट्रिस्ट को भी लोग कहते हैं पागलों का डॉक्टर है.
तो इस तरह के जो labels है, I think we have to come out of it. We have to discuss mental illnesses because we might brush it under the carpet, but it is a reality that all of us might either have faced depression in our lifetimes or might have come across somebody in our close circles who has been a victim of depression. तो अगर हम खुद को educate नहीं करेंगे, उसके बारे में communicate नहीं करेंगे, तो we won't be able to resolve it. Right. So Nitin, can you hear me? I can hear you. Nitin, we were discussing treatments of depression. So, as a doctor, what do you think कि किस तरह से depression को या किसी भी इस तरह के mental illness को treat किया जा सकता है? Yes, so if you talk about treatment of depression, every treatment in medicine have two aspects. One is preventive and the other one is curative. By preventive we mean कि किस तरह से हम उस बीमारी को prevent कर सकते हैं कि वो बीमारी हो ही ना. जैसे आपको अगर स्ट्रेस है और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एक रूटीन फॉलो करें, एक डाइट अच्छी फॉलो करें, अपने दोस्तों से बात करते रहें, तो इस केस में स्ट्रेस डेवलप होगा ही नहीं डिप्रेशन में. और मान लीजिए अगर आपको या किसी को डिप्रेशन हो गया है, क्लिनिकली डायग्नोज हो चुका है, तो इन दैट केस उसमें ट्रीटमेंट के कई सारे ऑप्शंस होते हैं. काफ़ी फेमस एक है साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं, जिसमें कि जो काउंसलर या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं मरीज से और अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करते हैं कि कैसे जो डिप्रेशन की जो जड़ है उसमें जाके उसको ख़त्म किया जा सके. और इसके साथ साथ कई बार दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है, तो मेडिकेशंस भी ज़रूरी होती हैं कुछ केसेस में. मेडिकेशंस में मैं आना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात जो बतानी चाहिए लोगों को कि मेडिकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं किसी भी केस में. अगर आप फर्स्ट टाइम किसी डिप्रेशन केस की बात करें तो 6 to 9 मंथ्स का कोर्स होता है मेडिसिन का और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स. ओनली इन रिकरेंट केसेस ऑफ डिप्रेशन वी नीड अ लॉन्गर टर्म फॉर मेडिकेशंस. So if we combine psychotherapy with medications, most of the patients they feel well after 6 to 9 months. और एक जो काफी लोगों को डर रहता है कि these medicines will be habit forming, उनको उसकी side effects भी हो सकती है. So how can we remove that myth? इसमें हमें ये देखना है कि कोई भी मेडिकेशन हो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है. जैसे अगर आप कॉमन रूटीन एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, आपका वेट गेन हो गया, स्लीप में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है. अगर आपको ये सब हो रहे हैं तो अपने साइकेट्रिस्ट से बात करिए. वो हो सकता है दवाइयाँ चेंज कर दें, आपको लेने का तरीका बता दें जिससे ये कम हो जाए. और हैबिट फॉर्मिंग की बात हुई तो ये बिल्कुल भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है. ये एक मिथ है जो हमें खत्म करना चाहिए. और एक आई हैव आल्सो नोटिस्ड कि कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट्स खुद ओवर द काउंटर ले लेते हैं एंड दे स्टार्ट पॉपिंग देम. तो इट इज वी वुड लाइक टू गिव अ मैसेज अक्रॉस टू पीपल कि बिना साइकियाट्रिस्ट या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के आप किसी भी प्रकार की मेडिकेशन ना शुरू करें और खासकर एंटी डिप्रेसेंट्स को ना ही लें. So Suman, my next question is to you. We have talked about women, we have talked about the elderly, we have talked about young people who are working in stressful jobs, but we have not spoken about young kids and students. So since you are a young mother, you are raising a kid. तो बच्चों में डिप्रेशन होने के क्या कारण होते हैं और उनको किस तरह से इन मेंटल इलनेसेस से दूर रखा जाए? Paritosh, as we know that depression can affect anybody irrespective of age, so obviously our kids are not immune to it. There are various reasons जिसकी वजह से बच्चों में depression होता है. These days work studies का इतना pressure रहता है बच्चों पे. Sometimes they might have some disturbed family environment, or they might have some stressful life events like loss of some near dear one. But what I personally have felt that I have observed that these days kids they spend most of the time on video games, computer games,
they play with cell phones, and they don't go out, they don't make the social, networks, they don't make friends, and they live in a virtual world. What I've noticed is कि आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में होते हो, जब आप वीडियो गेम्स खेलते हो या कंप्यूटर गेम्स खेलते हो, these kids do not learn to handle defeat, क्योंकि वहां पे रीस्टार्ट का बटन हमेशा होता है. The moment you realize you're defeating the game, you're losing the game, restart it. So what happens कि ये बच्चे जब actually real life situations face करते हैं, and when they get defeated, even in like small competitions या एग्जाम में फेलियर हो जाता है, they just cannot handle that defeat, that failure. इसीलिए इतने सारे केसेस आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट है 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए या नीट में क्लियर नहीं हुआ नीट का एग्जाम, they commit suicide, which is very shocking. They cannot handle such small problems. So I think यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है बहुत important, that they encourage their kids to go out, to move out, to play outdoor games. क्योंकि आउटडोर गेम्स जो फिजिकल डेवलपमेंट में तो हेल्प करते हैं, बट मेंटल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज उससे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है ना. समटाइम्स यू लूज, समटाइम्स यू विन, वो डिफीट एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है. दे मेक गुड सोशल बॉन्ड्स विद अदर पीपल. तो क्या होता है उससे कि उनमें जो उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है दैट इंक्रीजेस, एंड इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस दे हैव सम पीपल अराउंड, क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट ओपन अप विद देयर पेरेंट्स, दे माइट ओपन अप विद देयर फ्रेंड्स. सो आई थिंक कि दिस यहाँ पे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है. सेकेंडली, पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल्स देमसेल्व्स. व्हाट वी सी इज कि पेरेंट्स खुद ही दे आर फोन एडिक्टेड. So how would they expect their kids, not to touch phones? So they have to set a example. Unless and until it is very important, they should not be like using cell phones. No, cell phones should be used only for some business calls or some important official calls. So that will give an example to the kids also. So this will definitely help to curb this depression menace in children. So we are very happy to have with us Dechen. She's from the Royal Bhutan Revenue Service. Hi, Dechen. Hello, Paritosh. So I would like to share an episode from our CRPF training with our viewers. We were undergoing very strenuous physical training at the CRPF Academy sometime in January. Yes, and most of us, the officers from the Indian Revenue Service, at the end of the day would be tired, extremely tired, fatigued, dejected, but all 5 officer trainees from Bhutan, they would be beaming, very, very happy. So, Dechen, what is the secret of the happiness of the people of Bhutan, and why is this tiny kingdom so happy? Tell us the secret. First of all, we are from the land of happiness. We are from the land of GNH, Gross National Happiness, and we seem happy from the outside because we smile all the time, and that is something very kind we are asked to do since from our childhood. And as far as I know, my country is very happy because there are lots of kind people in it. kidding. Jokes apart, Bhutan is a happy country because we have such generous, giving leaders. When I say leaders, I talk about my king, my 2 kings, His Majesty the 4th Druk Gyalpo, Jimmy Singh Wanchu, who introduced GNH concept to Bhutan, and who also gifted democracy to its people. And then my 5th Druk Gyalpo, His Majesty Jimmy Gyalpo Namgyal Wanchu, who's also following his father's steps to give happiness to its people, and also fighting very hard at this situation to stop coronavirus in Bhutan. And then we also have, when I say leaders, we also have the government of the day, led by honorable prime ministers, who is working very hard to frame policies in line with GNH frame. And then I hope you know what GNH is. It is Gross National Happiness. And it was introduced by our 4th king. It has 4 pillars, and the 4 pillars are sustainable and socio-economic development, preservation and promotion of culture, conservation of environment, and it has good governance. And the second point why I think Bhutan is happy is Bhutan is a Buddhism country,
and there are a lot of religious people in it. We are surrounded by lots of monasteries and temples, and we have very rich culture. And I feel Buddhism is such a peaceful religion, and I'm sure so are the other religions as well. But since majority of the people in Bhutan follow Buddhism, we practice kindness. We practice to stay calm. We practice to be peaceful, and we practice to chant prayers for other sanctioned beings. So we are always ready to help each other. I'm not saying that all people are very kind and we have excelled at that level, but since childhood, because of our religion, we are taught to be kind. So maybe this is one reason why Bhutan is very happy, because where there's kindness, where there's kindness, there are peace, and where there's peace, there's always happiness. And my third point would be that we are a small country surrounded by nature, and we have 65 to 70% of our land covered with forest in our country. And also, there's a saying called less is more. So we are less in numbers, and we can always reach out for each other when in need. Our kings are there to help us. Our government is there to help its people. So with very limited resources and facilities available, we are happy with whatever we have. And also, to let you know, we have free education facilities. We have free health facilities, and that is why the people are happy. That is why they don't have much stress to take thinking about their kids' tuition fee or maybe their health care. And then we have fresh air to breathe. So all the rich countries don't have fresh air to breathe, but we do. So I feel, Bhutan, though as a country, is developing and is poor compared to other countries, but people living in it have a very rich heart. So that is why we are happy. That is such a beautiful answer, and Anukriti would agree that their presence in our campus makes us happy as well. Just looking at their beaming, happy, smiling faces. Yeah, definitely. They're always smiling, and they are physically also very fit. Tashi, for example. So he has introduced fitness to our whole batch. I'd also like to declare that not all people I don't say not all people in Bhutan are very happy. We are humans, so we have emotions. So we get sad sometimes, but majority of the people are happy and satisfied with whatever we have, with very, less and scarce resources we have, but we're satisfied. We are, we can adjust. So that adjustment also leads to happiness. We are happy with whatever we have. So that is one major reason. Right. Thank you, Deep. You should visit Bhutan because you'll see a lot of smiling faces there, even more than what we are doing. Our smile is nothing. Yeah, definitely. So with this, we come to the last question of the interaction. Before I put out the question, I must thank all of you for being on this talk. All of us, while we were preparing for the civil services exam, the UPSC civil services exam is considered a very stressful journey. It is very demanding physically, mentally, psychologically, emotionally. So, उस दौरान तुम लोगों ने क्या किया? What did you do to help you cope up with that stress? And also give a brief message to our viewers as far as the mental health battle is concerned. Suman, I'll start with you. Paritosh, stress is inevitable when you prepare for a very competitive exam like that of UPSC. So definitely I had stress, but then stress, I would say that stress is basically of two types. One is eustress and one is distress. So eustress is the beneficial stress which one should have to clear any exam. Otherwise you won't have the push or the motivation to clear an exam. But you should be careful enough that this eustress does not turn into distress. That will ruin you. So in my case, I had a group of good friends who were also preparing for UPSC. So I used to frequently discuss my problems, my issues with them, and I got some moral support from them. And apart from that, I had my husband also, and he actually lent his shoulder always to me to lean on. And then I used to engage in some activities like walking, going for long walks,
and I was interested in listening to music. So whenever I used to feel stressed, so I used to take a break and I used to listen to music. And I had a routine that every 6 months I used to go out to visit some place. I mean, it could be a vacation for 2-3 days. So me and my husband, we both used to pack our bags and we used to just move out. So that gave some fresh air to me, some new environment, and I got a break from the routine UPSC preparation. That actually it really helped me to come out of that stress and to begin again afresh. So I think these things help me. How about you, Anukriti? Actually, Suman very beautifully explained the whole process. Kaise stress ko you should not allow it to change to distress. So I used to do two things at least daily. I used to go for long walks, sometimes running. I didn't used to do a lot of running back then. Second is, मेरे मन में जो भी होता था, it used to come out. I used to be at home, so I used to daily make a video call to my mom, and I was staying with my in-laws. So we used to make sure कि सुबह की चाय के वक्त या शाम पे we used to sit with them for 15-20 minutes और नॉर्मल बात होती थी. तो जो भी अंदर चल रहा होता था, अगर रोना भी है, अगर किसी चीज से परेशान, तो वो हो जाता था. एंड दे वर आल्सो वेरी हेल्पफुल. सो दे यूज्ड टू कम ऑफन इनटू आवर रूम कि सब ठीक चल रहा है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. आई एम श्योर जो लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं, हु आर नॉट विद देयर फैमिलीज, उनके लिए इट्स मोर प्रॉब्लमैटिक. सो दे शुड ट्राई टू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल जिनके साथ दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. And I've come across many people who don't talk to their families when they shift inside. कई दिनों तक उनकी बात नहीं होती है पेरेंट्स से. So they should make sure, or at least the parents should make sure that daily या हर 2 दिन में एक बार कम से कम they should have a call just to know कि कैसा चल रहा है उसके साथ. मतलब परेशानी में है तो you can sense it, right? If you are daily in a conversation with someone, तो this should be ensured. एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो यूपीएससी की साइकिल होती है, इट्स वेरी लॉन्ग. वी नो 1 साल का पूरा टाइम पीरियड होता है. तो लोग पूछते हैं कि आप क्या 15-15 घंटे पढ़ते थे या 10 घंटे पढ़ते थे. तो इट्स नॉट पॉसिबल कंटिन्यूसली मशीन की तरह पढ़ना. जैसे सुमन ने बताया कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो देन टेक अ ब्रेक फॉर 5-6 days. एब्सोल्युटली डोंट टच द बुक्स. अब प्रीलिम्स के एग्जाम से 1 महीने पहले ठीक है, यू स्ट्रेच आउट योर लिमिट्स, थोड़ा सा आप जाते हो 12-15 घंटे की तरफ. बट उससे पहले डेली इफ यू आर मेंटेनिंग अ शेड्यूल और 7 से 8 घंटे जो डिसाइड किया है वो पढ़ पा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी रिलैक्स स्टडीज. और वो जो बहुत स्ट्रेन्यूअस फेजेस होते हैं वो बहुत कम आने चाहिए, अदरवाइज यू कोलैप्स इन द एग्जाम. तो वो बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना. एंड नाउ आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शेयर योर एक्सपीरियंस. हाउ डिड यू मैनेज इट? I was away from home, so and this was while I was in college. I had stayed with my family, so this was my first experience away from home. So I used to talk to my family on a regular basis, and music was my refuge. So whenever I used to feel stressed, I used to sing at very high volumes on the after going to the terrace. So 1-1 घंटे तक कभी-कभी मैं गाता रहता था. So that is how I tried to cope up with the stress. Unfortunately, that might have stressed a lot of people around me, पर मेरा तो relief हो जाता. Same. Yes, parents should also understand. I think sometimes when you don't study या थोड़ा 1-2 दिन का break ले लेते हो, then everyone starts pointing out क्या चल रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, कैसे निकलेगा एग्जाम. तो there should be balance of everything. I would also like to add one thing here, that what happens during preparation, mood swings are very common. You have your lows, yes. You have your up. So that time we need to have a very supportive family. Like I was also staying with my in-laws, so you need to have a very supportive family. Right, they should like understand like what is she undergoing through. Usually what happens, the parents sometimes they don't understand. They think like ये एक तो बहुत बदतमीज हो गई है, ये ऐसी हो गई है, तो ऐसे ही रहती है हमेशा. So right. These things complicate yes. The issue. So यहाँ पे like you should have somebody very supportive or understanding. Like I had my husband, he understood like कि हाँ इसका normal है, अभी कल okay हो जाएगी. He used to motivate me. So you should have one person who's understanding, who's motivating you whenever you feel low. कि नहीं हो जाएगा, सब okay है, सब chill है, all is well. So that is also important.
Right, right, right. So let me take this opportunity to tell our viewers, particularly those students who are preparing for the civil services exams and are undergoing any kind of mental stress, to reach out to us. I mean, Anukriti is very accessible on her social media platforms. You can also text us on our social media platforms. We'll try to help you in whatever capacity that we can, or try to get you in touch with those who can. So let us wrap up. Unfortunately, we could not connect with Nitin because he seems to be having data connectivity issues at his end. So to everybody out there who's watching the video, stay strong, stay happy, stay safe. Thank you. Bye. Thank you, Paritosh. Thank you.